Hello everyone, myself Kunal and currently I am pursuing BTech degree in Department of Aerospace Engineering and today is our third lecture in indefinite integral. So first we try to recap हमने क्या क्या चीजें पढ़ी हैं. So हमने अभी तक इंटीग्रल्स के बेसिक्स पढ़ लिए, उसके प्रॉपर्टीज पढ़ लिए, कुछ बेसिक फॉर्मूले पढ़ लिए एंड नाउ वी आर ट्राइंग टू अप्रोच द इंटीग्रल लाइक कैसे किसी भी कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल को अप्रोच करनी है. सो कल हमने एक 3-4 टेक्निक के बारे में देखा था जिसको बारी बारी से हमने ब्रीफली इलाबोरेट करनी थी. सो कल हमने पहला टेक्निक पढ़ा था विच इज सब्स्टिट्यूशन, जिसमें हम किसी वैल्यू किसी गिवन इंटीग्रल को उठा के उसको किसी फंक्शन में सब्स्टिट्यूट करते थे एंड वी ट्राई टू कन्वर्ट एलिमेंट्री एलिमेंट इनटू न्यू एलिमेंट्री एलिमेंट, बेसिकली नए फेवरेबल इंटीग्रल में कन्वर्ट करते थे एक कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल को. सो टुडे we will start with some example, some basic example, and then we move to the second technique to how to approach a complex integral. So first we look into the first problem of today's session, which is look like dx cos x minus alpha cos x minus beta. Nothing is in numerator. Nothing is in numerator given. So what we know that like cos, how to approach this? This is a point. So we know one thing is like if we go through the term like sine of a plus b, if we go through the term like sine of a plus b, so what is sine of a plus b? So sine of a plus b is sine a cos b cos a sine b, right? Sine a, let me write that, it is sine a cos b and cos a sine b. Sine a cos b and cos a sine b. I'm writing in short. C stand for cos and S stand for, and the S stand for sine. So if we like in numerator nothing is given, if we proceed through like if we subtract, okay, so what we have to do, like in numerator nothing is given, so we try to approach that our basic this is a complex function with no direct integral we know. So our approach is to convert it into a favorable integral जिसकी integration हमें पता हो. Do is we just sin x minus alpha minus x minus beta, which comes into a constant. Like here variable is x. Let me write that. Okay. Let me write that sin of x is our variable. Sin of, we can write it as sin of x minus alpha minus x minus beta. So in numerator we get sin beta minus alpha if we subtract that x minus beta. So our basic approach is to convert this complex function into a favorable integral जिसकी integral हमें पता हो. So what we do is we just subtract these x minus alpha, x minus beta, because if we divide by this denominator to numerator, we get the tan term. Like sine by cos is tan. So we get the tan term and we know the integration of tan x. In yesterday class, we actually prove it as well. कि tan x की integration क्या होती है? ln sec x. So we try to approach by some basic formula. तो हमें करनी यही है कि कोई भी इंटीग्रल हमें दिया हुआ हो, उसे हमें बस करना ये होता है कि जो भी हमने बेसिक फॉर्मूले पढ़े हैं कॉम्प्लेक्स फंक्शन को इंटीग्रेशन को अप्रोच करने वाले जो टेक्निक है उसे लगा के उसमें कन्वर्ट करनी होती है. सो हियर इज सम कॉस्ट टर्म, और आज हम एक ट्रिक के बारे में जानेंगे कि कैसे लाइक अप्रोच करते हैं नहीं करते हैं. तो इफ देयर अगर दोनों फंक्शन सेम दी हुई है लाइक कॉस और कॉस की दी हुई है, सो वी ट्राई टू सब्ट्रैक्ट फ्रॉम साइन. ऊपर न्यूमरेटर में साइन की फंक्शन क्रिएट करने की कोशिश करते हैं
अगर फंक्शन डिनोमिनेटर में साइन एंड कॉस दी हुई है, सो वी ट्राई टू कन्वर्ट इट इनटू कॉस। लाइक अगर यहाँ पे दिया हुआ था साइन एक्स माइनस अल्फा कॉस एक्स माइनस बीटा, सो वी ट्राई टू राइट इट एज कॉस ऑफ एक्स माइनस अल्फा माइनस एक्स माइनस बीटा। ये एक ट्रिक है, बेसिकली ऐसा कोई बताएगा नहीं, बट मेथड ऑफ अप्रोच में बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तो आपको समझ में आ जाएगी। So their both function is same, which is of cos, so we try to subtract it from sine. And when we do that, after writing it as in sine of x minus alpha minus x minus beta form, which is as now this is our sine of a minus b form. And what is sine of a minus b? So the sine of a minus b is, let me write here, sine of a minus b is sine a cos b. Let me write it as a. This is a and this is b. And this is of the form of sine of a minus b. So sine a cos b minus cos a sine b. Okay. This is our numerator. And what in denominator? If x minus alpha be taken as a, so in numerator cos a cos b, right? And if we divide numerator by denominator, what we get? We get cos b get cancelled. So we first get tan a. T stand for tan a. Try to connect me. Tan a minus tan b. And what is a? A is our x minus alpha and b is our x minus beta. And now yesterday we learned about the integral, the basic formula of integration of tan x and tan. So what is the integration of tan x? It will be ln sec x. So what is it integration? It integration look like ln mod sec of x minus alpha minus ln sec mod sec of x minus beta. And now when we use some basic property of log, so we know that like log a minus log b is equal to log a by b. So this will come. And this is our constant because we create the sign form. ट्राई टू रिमेम्बर में, ये एक छोटा सा ट्रिक है कि अगर डिनोमिनेटर में दोनों फंक्शन सेम दी हुई हैं, सो वी ट्राई टू कन्वर्ट इट इनटू साइन इन न्यूमरेटर। अगर दोनों फंक्शन डिफरेंट है, लाइक एक साइन की है एक कॉस की है, सो वी ट्राई टू कन्वर्ट इनटू कॉस। इट्स स्मॉल ट्रिक, ट्राई टू रिमेम्बर और इट्स ऑटोमेटिकली कम आउट व्हेन यू प्रैक्टिस मोर। सो ये अप्रोच था। हमें बस करनी है कि जो भी हमने बेसिक फॉर्मूले पढ़े हैं इंडेफिनिट इंटीग्रेशन के अंदर अभी तक, जो भी हमारा कॉम्प्लेक्स फंक्शन दिया हुआ है, वी ट्राई टू कन्वर्ट it into that. Now we move to the second problem, which is like dx by dx. So which is like dx by 1 minus sine of 3x. So we know one thing, like how to approach this problem is if we multiply in numerator and denominator by 1 plus sine 3x, because this is a complex function, right? Nothing is in numerator given. How to approach this? So one way is like if we multiply it by 1 minus, if we multiply it by 1 plus sine 3x in numerator and denominator as well, 1 plus sine 3x, if we multiply it by in both numerator and denominator as well, sine, this is a short form. You can also write when you solve big problem like as for sine and 3x in subscript as sine 3x. Okay, so if we multiply that and we know that this is of the form a minus b into a plus b, which turns into a square minus b square. So it converted into 1 minus sine square 3x. Okay, so 1 minus sine square 3x will be cos square 3x. So here we go. And now we know that, and when we divide this, so what we get? Sec square 3x, sec 3x, tan 3x. And this converted into a favorable integral because we know that the integration of sec square x is
tan x. The integral of sec square x will be the tan x. Now here we apply the property 4, which we already read in our first lecture. Whatever is in like f of ax plus b1, it will be divided. I am again repeating that. If a function, give me some time. Wait. Sorry for the late. Someone arrived at my door. Okay. So now we continue. Like we know the okay, where we are. Okay. Uh, we know that if the integral of fx function is okay, so we know the if the integral function of fx is something gx, fx plus b integration will be gx by a, right? Whatever in coefficient of x, it will be divided by that. So here we get the sec square x is our basic function जिसके हमें इंटीग्रल पता है कि वो tan x होती है. So the when we apply the property 4, what we get? Tan 3x by 3. And this integrand has integral sec x, right? But here the whatever is 3x, so sec 3x by 3, which is divided by the coefficient of x. I hope you understand that. Now we move to the next part, next question, and then we discuss today the new technique of approaching the complex integral. So this is our next problem, which look like e to the power 2x minus 1 divided by e to the power 2x plus 1. So how to approach this? Like we, whenever this type of e to the power 2x or something written, so what we do? We try to write like e to the power 2x minus 1. How can we write this in another form? Like if we have to write, so we have to like e to the power x minus e to the power minus x multiply over e to the power x. We can write it as, just take e to the power x common, right? A basic factorization. We can write it as na. So similarly, if we do in denominator, how can we write it as e to the power x? We just take e to the power x common. So what we get? We get e to the power x plus e to the power minus x, right? And now this e to the power x get cancelled. And now we know that if we substitute this function as some variable u, so our difference, so its differentiation is our numerator, right? If we substitute this function as something t or whatever, so its numerator, whatever written in numerator is its differentiation, right? So here we use the first technique of approaching complex integral, which is the substitution method. So हमने वही apply करा यहाँ पे, and then when we integrate 1 by t, which is comes out to ln t, and we substitute t as e to the power x plus e to the power minus x, or we can write it as both. I hope you will understand that. Try to solve this question, or if you're not, then try to look into its solution because it's also easy. Now we move to the next question. This is 24. Some problem which are maybe not written directly, may be written in some word. So try to solve some word problem of definite integral. So read first the question. What is given is, if f dash of x square is equal to 1 by x, where all x greater than 0, and f of 1 is equal to 1, so we have to find the fx. We have a function given, which is a function of x square, not x, a function of x square. And actually it is differentiated, which is equal to 1 by x. So what do? We first here substitute x square is equal to t.
what we do? Weird. Okay. If we substitute, we have to just substitute because we have to convert this into a simple function. There given is f dash x square is equal to f 1 by x. So what? Because it's a function of x square and wherever we read, अब तक हमने जहाँ पढ़ा है सब किसके फंक्शन था? एफ एक्स का था, विच इज अ लीनियर फंक्शन, राइट? यहाँ पे okay. So what we have to do, we have to substitute x square as t. So if I do that, x square as t, our new function turns into like f dash x square की place पे अपन को रखनी है t. If x square is equal to t, so what is the value of x? The value of x is the root t, right? The root over t. So here we get 1 by x. So x value will be, so this is our function. So what I do, I just convert given function into a favorable function by just method of substitution. So जो बस सोचनी है कि कितनी इंपॉर्टेंट है एक सिंपल सब्स्टिट्यूशन से कॉम्प्लेक्स फंक्शन को कितने इजी फंक्शन में कन्वर्ट करी जा सकती है. सो मैंने बस वही करा है, एक्स स्क्वायर को टी पुट करा है and just f dash x square will be 1 by x given. So our new function will be like f dash t is equal to 1 by root t. And now I know that f1 is equal to 1. So if we integrate this function, so what we will get, ft is equal to, what we will get, 2 root t plus some constant, right? Plus some constant. Okay. So, and now how to find the constant, because f1 is 1 given. So try to put here. So if we put t is equal to 1, so what we get, the c value, because f1 is equal to 1 given, right? So if we put here 1, so 1 is equal to 2 plus c, because root 1 is also 1. So we get the value of constant is minus 1. I hope you will understand that. And we can replace this to t, g, whatever. मैंने पहले कहा था आप कुछ भी सब्स्टिट्यूशन में वैल्यू ले सकते हो. आप t ले सकते हो, u ले सकते हो, v ले सकते हो. वेरिएबल को किसी वेरिएबल से सब्स्टिट्यूट करने से इंटीग्रल पे, इंटीग्रेंड पे कोई फर्क नहीं पड़ता है. आप कोई भी वेरिएबल ले सकते हो. सो आई जस्ट substitute x square to t. You can also substitute, you can also replace t to x. So it's not changed. So our fx is, what is our fx now? Our fx is 2 root x plus minus 1. To just substitute, just replace x by t by x. So we get, this is our function. I hope you all understand that. Let me explain again. We have a given function f dash x square is equal to 1 by x. So what so this is not a simple function, it's also a complex function. So what I do, I just substitute x square to t. And when we substitute it, we get f dash t is equal to 1 by root t. And when we integrate this function, the integration of 1 by root t is 2 root t plus c. And the f1, the value at 1 is 1. The value of function is 1 at t is equal to 1, which is given. Now what I do, I find the constant value, which is minus 1, and then I just simply replace t to x. You can replace any variable to any, जिससे integrand पे कोई फर्क नहीं पड़ता है. I hope you will all understand that. Let me erase it now. So hope you understand that. We just substitute x square by t, f dash t 1 by root t, and integrate with respect to t. So we first find the constant, and then we integrate this function, and then replace it by t is replaced by x. I hope you understand it. Now we move to the second technique जो आज हमें पढ़नी थी, which is है integration by part. Try to remember the first lecture, my word, which is integration is just the reverse process of differentiation.
राइट। सो बाय पार्ट क्या होता है कि कभी भी फंक्शन अगर प्रोडक्ट में हमें इंटीग्रेट करनी हो, लाइक अगर साइन एक्स डॉट एक्स की एक्स इंटू साइन एक्स की इंटीग्रेशन हो, लेट मी राइट हियर so you can understand. When we apply by parts, सब्स्टिट्यूशन तो हमें समझ में आ गया कि किसी फंक्शन को लाइक कॉम्प्लेक्स फंक्शन दी हुई है तो ट्राई टू सब्स्टिट्यूट सम वैल्यू कि जिससे वो कन्वर्ट हो जाए फेवरेबल इंटीग्रल में। बट बाय पार्ट्स कब लगाते हैं हम? तो वी अप्लाई बाय पार्ट्स जब हमारे पास इंटीग्रेशन करने को लाइक एक्स इंटू साइन एक्स कुछ भी प्रोडक्ट में हो, x into sin x, x into sin square x, something like log x, complex function, right? Log x multiplied sin x, something this form. So how to approach this kind of problem? So I just tell you integration is nothing but just the reverse process of differentiation. So we try to connect with differentiation first. So we know the product rule in differentiation. What is it? The product rule in differentiation is a function f dot g differentiation will be first we differentiate f taking g as constant and then we differentiate g taking f as constant, right? So this is our basic product rule of differentiation जो आपने पढ़ा होगा differentiation chapter में. What we do, we just try to manipulate this thing. If we find f dash g is equal to f dot g whole differentiation minus g differentiation of g dot f, and when we integrate this, what we get the integration of f dash, which is the differentiation of f with respect to x, whatever it is, dot g dx. So when we solve that, what we get f g minus integration of differentiation of g dot f dx. I know it's little bit seem complicated, but as we proceed on, चीजें easy लगने लगेंगी, ठीक है? ये बस ऐसे ही दिखाने का है, but try to understand. ये लाइन आते आते सब कुछ समझ में आ जाएगा. So what we do is f dash x is equal to v. We just put it. We just substitute the value of f dash x is v. So the fx will be like v dx and dx will be like u. So what is it? Now we reach the conclusion part. अगर हमें कहीं भी u v के टर्म में u v आर द फंक्शन जो प्रोडक्ट में लिखे हुए हैं, and if we integrate this function with respect to an elementary element x, so what we do, we first take u out of the integral and we integrate v, then we subtract, and then we integrate again, but first we have to differentiate u and then we have to integrate v. इसको सिंपल भाषा में अगर मैं बताऊं तो सबसे पहले हमें क्या करनी होती है, u को बाहर निकालना होता है, v को इंटीग्रेट कर देना होता है, फिर हमें u को डिफरेंशिएट, फिर u को साथ में डिफरेंशिएट करना होता है और v को साथ में इंटीग्रेट करना होता है. इट्स अ बेसिक फॉर्मूला. वो प्रैक्टिस से याद भी हो जाएगा. लाइक पहले u को बाहर निकालो, v को इंटीग्रेट करो, देन u को डिफरेंशिएट करो और v को साथ में भी इंटीग्रेट भी करनी है. ओके, सो नाउ द क्वेश्चन इज x sin x. इस टाइप का क्वेश्चन हमारे पास दी हुई होगी, x sin x dx. सो ट्राई टू लाइक टेक x as u and sin x as v. वैसे एक इसका स्पेसिफिक रूल होता है which we will read further कि किसे u बोलनी है किसे v बोलनी है. इसकी एक स्पेसिफिक रूल है which is also called as Eilert rule. So we also read in some time, but the first we have to understand it how to apply this formula here. So let us suppose x as u and sin x as v. So what we have to do, if x is equal to u and sin x is equal to v, so we have to first हमें u को बाहर करनी है इंटीग्रल से, so हमने x को बाहर करा
and then we have to integrate the function sin x. हमें sin x को integrate करनी है. Then we have to minus, and then we have to x को differentiate करनी है और sin x को साथ में integrate भी करना है. So if we, what is the integration of sin x minus cos x? So minus x cos x plus dx की x की differentiation 1, and again we have to integrate the sin of x, which is minus cos of x, and the cos x की integration होती है sin x. So we get minus x cos x plus sin x plus k. I hope you will understand that. अगर समझ में नहीं आई है, then I will again repeat. एक बार और मैं बता देता हूँ उसमें करना क्या है. So I have to just अप्रोच क्या है यहाँ पे है कि हमें बस ये फॉर्मूला लगानी है. वी जस्ट टेक x एज u, एंड हमने sin x को v लिया है. फिर हमने u को हमें बाहर निकालनी है एंड v को इंटीग्रेट करना है. पहले इस पार्ट को समझो. हमने किसी एक दो फंक्शन हमें प्रोडक्ट में दी हुई है. किसी एक फंक्शन को हमें u बोल देना है एंड दूसरे फंक्शन को v बोल देनी है. एंड हमें पहले u को इंटीग्रल के बाहर ले जाना है एंड v को इंटीग्रेट करनी है. तो हमने वही करा. हमने x को u बोला था, sin x को v बोला था. सो हमने x को बाहर करा एंड sin x को इंटीग्रेट करी. एंड देन वी हैव टू, जो u फंक्शन है, देन हमें इंटीग्रेट करना है जो हमने u को डिफरेंशिएट करा है एंड v को इंटीग्रेट करा है. उसकी जो फाइनल रिजल्ट आएगी उसे हमें इंटीग्रेट करनी है. सो व्हाट वी डू, सबसे पहले हमने x को डिफरेंशिएट करा एंड sin x को इंटीग्रेट करा. अब यहाँ पे जो जितने भी रिजल्ट है, यहाँ पे जितनी भी सॉल्व करने के बाद, जो भी इस मसाले को सॉल्व करने के बाद जो हमारे पास रिजल्ट आ रही, हमें उसे वापस से इंटीग्रेट करना है. फर्स्ट वी हैव टू डिफरेंशिएट u, वी हैव टू इंटीग्रेट v, और यहाँ पे जितने भी मसाले आए उसे हमें सॉल्व करनी है, उसे हमें इंटीग्रेट करनी है. So when we solve that, यहाँ पे क्या है, minus of cos x. So minus goes outside, which is converted into minus plus, and we know that the integral of cos x is sin x. So we get the final result minus x cos x plus sin x plus k. I hope you all understand that. अगर समझ में नहीं आई है कोई बात नहीं है, आगे हम लोग और भी इस पे प्रॉब्लम करेंगे तो चीजें क्लियर हो जाएंगी. ओके, नाउ क्वेश्चन अराइजेस कि हमें u किसे बोलनी है, v किसे बोलना है, क्योंकि दो फंक्शन दी हुई होंगी ना. एग्जैक्टली दो फंक्शन दी हुई होंगी प्रोडक्ट के फॉर्म में, तो हमें u किसे बोलना है और v किसे बोलना है, ये एक मैटर ऑफ पॉइंट है. तो उसकी एक बेसिक रूल होती है जो हमने अभी बताया था, आइलेट रूल. लेट मी एक्सप्लेन द आइलेट रूल. सो आइलेट रूल क्या होता है? I stands for inverse trigonometric function, L stand for logarithmic function, A stand for algebraic function, T stand for trigonometric function, E stand for exponential function. So whatever comes first, we called it as U. Like in above question, we have two functions. X is our algebraic function and sin x is our trigonometric function. So we have, let me write here to explain this. Right. So we have two functions. We have here algebraic function and we have here trigonometric function. So according to the Eilert rule, जो भी इस लिस्ट में पहले आए, like I, L, A, T, E is our U. So यहाँ पे हमारे पास algebraic function है and trigonometric function है. तो Eilert के according algebraic function पहले आ रही है. So we take it as U. And the rest function is our, which comes first, it will be U. जो भी पहले आए, this is a proper sequence, I, L, A, T, E. और इसमें जो भी पहले आएगा, we write it as U. I hope you all understand that, and we also explain this by some basic examples as well. Let me erase it. So try to remember first
what I stands for, what L stands for, what A stands for, what T stands for, what E stands for. So I stand for inverse trigonometric. I'm again repeating. L stand for logarithmic function. A stand for algebraic. T stand for trigonometric. ये एक प्रॉपर सीक्वेंस में लिखी हुई है और इसमें से जो भी मेरा फंक्शन आएगा, जो भी हमें फंक्शन इंटीग्रेंट की हुई होंगी, उसको इससे मैच करना है और उसके अकॉर्डिंग हम यू एंड वी डिसाइड करते हैं. लाइक वी लेटर ऑन डिस्कस, जब हम प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे ना तब चीजों को और अच्छे से समझ में आएगा. लाइक लेट्स मूव ऑन टू द सेकेंड प्रॉब्लम. जैसे यहाँ पे हमें दो फंक्शन दी हुई हैं. पहले यहाँ पे कौन कौन फंक्शन लिखा हुआ है वो देखते हैं. यहाँ पे हमें एक दी हुई है algebraic function x and tan inverse of x, which is an inverse function. So according to the I let rule जो इसकी सीक्वेंस है, यहाँ पे हमारे पास दो फंक्शन गिवन है. एक अल्जेब्राइक फंक्शन गिवन है एंड दूसरा इनवर्स फंक्शन गिवन है. सो आई कम्स फर्स्ट. सो हमें इनवर्स फंक्शन को u कहना है बिकॉज इसकी सीक्वेंस है, आइलेट रूल की सीक्वेंस है. उसके अकॉर्डिंग हमारे पास दो फंक्शन दी हुई हैं, एक अल्जेब्राइक एंड इनवर्स फंक्शन. सो वी हैव टू नेम इनवर्स फंक्शन एज u. सो वी हैव टू राइट इनवर्स फंक्शन एज u. सो वी राइट tan इनवर्स x एज u. आई होप यू विल ऑल अंडरस्टैंड दैट कि कैसे u एंड v डिसाइड कर रहे हैं. एंड देन वी हैव टू जस्ट अप्लाई दिस फॉर्मूला. दिस इज द बाय पार्ट्स फॉर्मूला जो हम अप्लाई करते हैं जब प्रोडक्ट के फॉर्म में दी हुई होती है. तो ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट. प्रॉब्लम देखते हैं और उसके बाद चीजें समझ में आने लगेंगी. सो आई जस्ट wrote tan inverse x as u. So our v will be the algebraic function which is given x. So we have to करनी क्या होती है, पहले हमें इंटीग्रल के बाहर ले लेना था u को. तो हमने हमारा u tan inverse x है, तो हमने इसे बाहर ले लिया. हमें पहले x को इंटीग्रेट करना होगा. Then we have to minus sign, you have to given, and then we have to differentiate u with respect to x. हमें इस given function को x के respect में differentiate करना है. And then we have to integrate this function. v को इंटीग्रेट करना है. फिर जो भी यहाँ पे प्रोडक्ट आएगा, जो भी यहाँ पे इसको सॉल्व करने वाला प्रोडक्ट आएगा, उसे हमें वापस से इंटीग्रेट करना होता है. दिस इज द बाय पार्ट्स फॉर्मूला. So when we integrate this x, so what we get, x square by 2 tan inverse x minus, when we what is the differentiation of tan inverse x? 1 by 1 plus x square. So we get 1 by 1 plus x square, and the integration of x dx will be x square by 2. I hope you'll all understand that. Now there is a simple manipulation. We just plus minus 1 because एक cancel out हो जा रही है, तो हमें बस वही करनी थी. And then we know the इंटीग्रेशन ऑफ 1 by 1 plus x square, कल ही हमने पढ़ा है कल के लेक्चर में, दैट विल बी tan inverse of x. So tan inverse of x, and in denominator 2 here is, so it comes out to the next step. So it will be the tan inverse x by 2 plus some constant. I hope you will all understand that कि हमने करी क्या है. So we just try to apply this formula here. tan inverse of x, u भी कैसे डिसाइड करनी है, तो मैं इसमें एक बार बेसिक से एक्सप्लेन करता हूँ कि हमें कैसे अप्रोच करना है. हमें फंक्शन दी हुई होंगी प्रोडक्ट के फॉर्म में. पहले मैं आइलेट रूल पहले मैं देखना है कि कौन कौन सी फंक्शन दी हुई है. फर्स्ट वी हैव टू आइडेंटिफाई कौन कौन सी फंक्शन दी हुई है, एंड देन वी हैव टू ट्राई टू मैच द सीक्वेंस ऑफ आइलेट टू फाइंड किसे u मानना है, किसे v माननी है. And then we just apply the by parts formula, which is u integration of v dx. ये देखने में बहुत बड़ा है, बट प्रैक्टिस से चीजें आसान हो जाती हैं, याद हो जाता है. सो डोंट ट्राई टू रिमेम्बर इट. वो प्रैक्टिस जितना ज्यादा करोगे उससे ज्यादा चीजें समझ में आ जाएंगी. जितना ज्यादा प्रैक्टिस उससे चीजें आसानी से सॉल्व होने लगती है. फॉर्मूला याद नहीं रखना होता है, वो अप्लाई करते करते ध्यान में जाता है, जहन में आ जाता है. सो नाउ नेक्स्ट मूव टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम. यहाँ पे हमारे पास फिर से फंक्शन दी हुई है. सो मैंने पहले कहा है हाउ टू अप्रोच दिस प्रॉब्लम. सो अप्रोच करने का सिंपल वे था, पहले हमें देखनी है कौन कौन सी फंक्शन दी हुई है.
तो हमारे पास फंक्शन यहाँ पे दिया हुआ है अल्जेब्राइक एंड लोगैरिथमिक, एंड आइलेट के अकॉर्डिंग लोगैरिथमिक फंक्शन की प्रायोरिटी जो है वो अल्जेब्राइक से पहले आ रही है। मतलब प्रायोरिटी कहना यहाँ पे गलत है, बट इसके सीक्वेंस के अकॉर्डिंग लोगैरिथमिक विल बी टेकन एज यू, बिकॉज ये पहले आया है। ओके, पहले हमने ये डिसाइड कर लिया कि यू किसे लेना है, वी किसे लेना है, एंड वी गेट दैट कि यू विल बी लोगैरिथमिक फंक्शन, सो वी जस्ट हमने उसे बाहर करा एंड एक्स को इंटीग्रेट करा एंड इट्स इंटीग्रेशन विल बी एक्स स्क्वायर बाई 2, एंड देन 1/x क्या हुआ, हमने u जिसे लिया था उसकी डिफरेंशिएशन लिखी हुई है, एंड देन x को वापस इंटीग्रेट करना था विच विल बी लाइक एक्स स्क्वायर बाई 2, एंड व्हेन वी रीसॉल्व द प्रोडक्ट, जब हमने ये एक सेकेंड जब हमने हाँ, जब हमने इसे सॉल्व करा, यहाँ पे जो भी आया बन के डिफरेंशिएशन ऑफ u एंड इंटीग्रेशन ऑफ v, तो हमने जब इसे सीरीज सॉल्व करा इट विल बिकम लाइक x by 2. So when we integrate the function x by 2 we will get x square by 4 plus some constant. So अप्रोच यही है कि सबसे पहले हमें करनी क्या है, फंक्शन को देखना है कि कौन कौन सी फंक्शन दी हुई हैं, एंड देन वी हैव टू राइट वी हैव टू मैच अकॉर्डिंग टू आवर द आइलेट रूल सीक्वेंस, और उसके बाद हमें आइलेट रूल सीक्वेंस को मैच करते हुए हमें बस ये दिखाना है कि कैसे फिर हमें बाय पार्ट्स लगा देनी है। पहले यू भी पता चल जाएगा, देन बाय पार्ट्स लगा देनी है। Like our last question, then we discuss some more in next class, which is like integration of ln x. Here nothing is given. ये यहाँ पे कुछ दिया हुआ नहीं है। ln x की इंटीग्रेशन हमने बेसिक फॉर्मूला ऑफ इंटीग्रल्स में पढ़ी नहीं है। ये कोई कॉम्प्लेक्स फंक्शन नहीं है, लाइक कुछ सब्स्टिट्यूट भी कर सकते हैं, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट भी नहीं कर सकते। सो व्हाट, एक ऐसा अप्रोच है हमारे पास, लेट मी रीड इट फर्स्ट। लुक एट दिस प्रॉब्लम, इंटीग्रेशन ऑफ ln x। सबसे पहले क्या है कि ये कॉम्प्लेक्स फंक्शन भी नहीं है जिसको हम कुछ दी हुई है, लाइक किसी को किसी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दें, तो सब्स्टिट्यूशन टेक्निक तो यहाँ फेल है। दूसरी बात, ये एक हमारा जो भी बेसिक फॉर्मूला लिस्ट था उससे भी ये मैच नहीं कर रहा, बट स्टिल ये एक फेवरेबल इंटीग्रल नहीं है हमारे लिए। सो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू कन्वर्ट दिस फंक्शन इनटू अ फेवरेबल इंटीग्रल। सो व्हाट वी डू, वी कैन राइट 1 into ln x. We just simply do 1 into ln x. ये तो लिख ही सकते हैं ना। And now this is converted into a product form. ये हमारे पास क्या हो गया, एक प्रोडक्ट के फॉर्म में आ गया। एंड वी नो दैट कि कभी भी अगर प्रोडक्ट के फॉर्म में दी हुई होती हैं, कभी भी अगर प्रोडक्ट के फॉर्म में दी हुई होती हैं, सो what we do, we just apply the by parts. We first identify which one is u, which one is v. So according to the आइलेट रूल के अकॉर्डिंग हमने देखी थी आइलेट logarithmic come first, then exponential. There is some exponent form, algebraic form. This is our algebraic form. We convert this function into algebraic and logarithmic, which is given. So we have to just apply the first we have to figure it out which is u, which is logarithmic is u, and then we have to apply the by part. So we get the favorable result, which is x ln x minus 1 plus c. I hope you will all understand that. From tomorrow, we discuss some more problem in by parts, and then we move to the next technique, which is partial fraction. Thank you.